Hello and welcome to another YouTube live. Today we have got two guys, जो बहुत close है हमारे because they are from LFC fan clubs. Now, as you all know, I am a Liverpool Football Club fan since 2006. जब मैं 7 साल का था, so of course there are two people here, Shivam bhai and Siddharth bhai here. I have had plenty only, but तभी I've had good conversations with them. Two really good gentlemen, that's I can tell you. So we are really looking forward to doing this episode, doing this YouTube live with them. तो चर्चा करने वाले आज ट्रांसफर्स की एलएफसी रिलेटेड। शिवम भाई पहले आपके पास आते हैं, हाँ, जो कि जयपुर कॉप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडमिन भी है, ही हैज वर्कड विद ड्रॉगबा आल्सो इन द पास्ट। काफी अच्छी कहानी है शिवम भाई की भी, अदर देन द फैक्ट दैट ही इज अ लिवरपूल फैन, राइट? So Shivam bhai, tell us a bit about your Jaipur Corp and how the experience has been, and कैसा लगा आपको ट्रांसफर विंडो ओवरऑल अभी तक? सो ट्रांसफर पे मतलब आते हैं सेकंड उसमें। फर्स्ट तो यार मतलब जयपुर को आई थिंक आई हैव गॉट अ गुड रिस्पांस फ्रॉम फोक्स एंड वन ऑफ माय immediate जो junior friends हैं, he is also handling with me and surprisingly when I started Jaipur Corp वो 9th class में था, just like you started Liverpool I think आपने बताया 7th class से। 7th क्लास में 7 साल का था जब मैं। 7 साल से, अरे वाह दैट्स अमेजिंग। मतलब मैंने भी 2004 से फॉलो किया था, बट लेकिन मैं तब तक 9th क्लास में आ चुका था एंड वो हैंडल करता है साथ में मेरे। जयपुर कॉप का रिस्पांस अच्छा है, वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट अ वे दैट वी कैन मेक इट ऑफिशियल। आई मीन टॉक्स विद एलएफसी टीम एंड हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं धीरे धीरे स्क्रीनिंग्स, जो उनका बेसिक रिक्वायरमेंट है। एंड ट्रांसफर्स की बात करें भाई, तो आई थिंक आई वाज रीडिंग समवेयर या मैं कल किसी से बात कर रहा था तो मुझे बताया मेरे फ्रेंड ने कि लिवरपूल इज वन, मतलब देयर आर ओनली 2 क्लब्स जिन्होंने अभी तक कोई भी साइनिंग नहीं करी है, उसमें एक हम है, one of the two. एक अच्छा स्टार्ट बताऊंगा, बट उससे पहले कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। प्लीज स्टार्ट, आई एम वेरी एक्साइटेड। हाँ, लेट हो गए थे 5 मिनट, तो आई थिंक हमें थोड़ी गालियां पड़ना शुरू हो जाती है, बट या शांभवी मिश्रा इज ऑफ कोर्स, शी इज अ सोशल मीडिया कंसल्टेंट, हमारी काफी हेल्प करती है व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट। द्वैपायन, आई रन द पॉडकास्ट विद द्वैपायन मुखर्जी है, who is my co-founder. IFP has been doing richer with the LFC associations. एक फनी बात बताऊंगा, द्वैपायन इज अ रियल मैड्रिड सपोर्टर, बट हाँ मेरे साथ रहते रहते उसको भी लिवरपूल पसंद आने लग गई है। So yeah, शिवम भाई के ऑलरेडी, शिवम भाई के काफी अच्छे कमेंट आ रहे हैं। शिवम, यू लुक लाइक दर्शन रावल। एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर दैट। आई थिंक इस कमेंट के बदले आपसे अलग से बात करेंगे। एब्सोल्युटली। सिद्धार्थ भाई आपके पास आते हैं। सो आपसे मेरा एक अलग क्वेश्चन होगा कि आपने मुझे बहुत ही अच्छी स्टोरी बताई थी एलएफसी गुवाहाटी के लोगों के बारे में। टेल अस अ बिट अबाउट दैट। आपने बोली तो उसकी ओरिजिन बताया था, एंड गिव अस योर टेक ऑन ट्रांसफर्स। लाइक शिवम भाई के व्यूज अच्छे लगे मुझे काफी, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़े प्रॉब्लमैटिक तो है अभी तक हमारे लिए, बट आपको क्या लगता है? With the logo, I think जो design है, it's a traditional gamusa, so it's like a garland that we wear. So Right. it is like if you felicitate someone, you give it to him. So it's like a Right. mark of respect and welcome and all that. So Wow. I wanted to incorporate that in the logo. I'm not sure how, because I'm not a graphic designer, but I tried as much as I could, and I think, I mean, for me it's okay, but I don't know about you. Otherwise, with transfers, with transfers, I mean, I'm not sure at this point because we have a new coach in, and the coach is going to first assess the team. So we cannot rush into transfers. And I mean, he will obviously, with the preseason, he will know what needs to be done. But I'm not sure that we'll have anybody in. I don't think so, because by this time we would have had some like strong rumors. We don't have any, like zero. I think that's a very logical response, Siddharth bhai, because even I feel that Arne Slot might, is taking that time to kind of assess his squad. Loki bhai here says up the rates. Loki bhai, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, even I want to say up the rates, पर आज जो अभी स्टैट्स प्रेजेंट किए कि लिवरपूल आर वन ऑफ द 2 क्लब्स, अब लिवरपूल इकलौती क्लब रह गई है, बिकॉज आज फुलहम ने रायन सेसेन्यो है, एक प्लेयर, एक लेफ्ट बैक है, उसको एज अ फ्री एजेंट था, उसको खरीद लिया है। And they have also bid 35 million for Emil Smith Rowe. So congratulations, we are the only one left. And yeah, we have got Shubhankit also joining. रायन सेसेन्यो एक टाइम पे हमारा टारगेट भी था।
Yeah, I remember. Absolutely. I remember. Shubhankit bhai is here with us. Shubhankit bhai, मैं आपसे पहली बार मिलता हूँ, पर I think it's an honor for me. So आप कहाँ से, आप जयपुर से हो या फिर आप गुवाहाटी से हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है शुभंकित भाई मुझे. हेलो. हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है कि एकदम एलएफसी ट्रांसफर कमेटी की हो गई है कि बोल नहीं पा रहे हैं वो शुभंकित भाई. शुभंकित भाई आप चाहो तो एक बार रिजॉइन करके देख लो और फिर मैं आपको रीऐड कर दूंगा स्ट्रीम पे. ठीक है, चलो ओके देन. हाँ, मूवमेंट हो गया. सिद्धार्थ भाई विद द ग्राफिक डिजाइनर पार्ट. हाँ, Doipan also struggles with tech issues, but yeah, वो वाली बात है कि he does 20 other very good things, so yeah, that kind of makes up for it. Anyway, शिवम भाई, बात करते हैं डिफेंसिव मिडफील्ड की. ठीक है, एडरसन हैज बीन लिंक्ड. जुबिमेंडी मुझे काफी अच्छा नाम लगता है स्पेन के लिए, वाज अमेजिंग. देयर आर अदर नेम्स इन द मार्केट. मैनुअल उगारते एक प्लेयर है जो यूनाइटेड ने काफी, लाइक इट सीम्स द डील इज वेरी मच इन द एडवांस स्टेजेस. देयर आर लॉट ऑफ rumors around it. Now Stefan Bacek is at the club. Endo was signed last season. We know the things with his age. What like आपको क्या लगता है कि is a defensive midfielder the biggest priority, or do you think it's another position? Yeah, it is the biggest priority because Endo first half of the season was fantastic. He looked like मतलब पहले 8 games Soboslai लग रहा था signing of the season. Then Soboslai का dip आया तो Endo seemed like that wow, we have found out a gem just like Liverpool does in that amount of money. फिर एकदम से McAllister का form आया and Endo का थोड़ा सा dip हो रहा था, which is very normal. He has come from a league जो इतनी aggressive नहीं है and adjusting to an Asian athlete, so adjusting to Liverpool's weather and everything, it was tough for him. But that doesn't mean that he isn't good. But still, yeah, ultimately the point is we are competing against City and now Arsenal. So सिर्फ एवरेज से काम नहीं चलेगा या अबव एवरेज से भी नहीं. वी नीड एन एक्सीलेंट CDM व्हिच वी डोंट हैव राइट नाउ. स्टीवन बेजेटिक इज स्टिल अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट. हमने उसके 10 गेम देखे बस अच्छे. Since then he has been injured. So I've been Liverpool fan for 2 decades now. तो मैं longevity में believe करता हूँ rather than 10 glimpses. So I'm not saying he's not good, but we need to respect the time. We need to nurture him. Now वो 10 गेम भी क्लॉप के अंडर थे, अब आर्ने स्लॉट के अंडर है. I think we require a CDM. There's no doubt about it. Ugarte, by the way, is very nice. I like him. बहुत I think he's Uruguayan, right? Sorry? He's from Uruguay. Yeah. एक क्वेश्चन आया हमारे पास कि आर LFC फॉलोअर्स रेड फ्लैग्स. मैं तो कहूंगा कि पूरे ग्रीन फॉरेस्ट में अगर एक रेड फ्लैग हो तो वो है LFC फैंस. बिकॉज क्या करें अब, मैं तो कहूंगा सारे जो फैंस हैं एज कम्पेयर टू LFC फैंस आर रेड फ्लैग्स. बट LFC फैंस है ग्रीन फॉरेस्ट की तरह. बट यस, वी आर रिप्रेजेंटेड बाय रेड, which is fire, which is fierce, and I think that's what separates Liverpool from the rest. सिद्धार्थ भाई, आप क्या कहना चाहिए इस बात पे? आपको क्या लगता है, आर LFC followers red flags? I think that's a dad joke, to be honest. Yeah. No, of course not. I mean, I have found like it's a family out of a family, right? It's a second family, and the only thing that made me love this club is the way the fans interact with the club and how the club interacts with the fans. So I think like the ethos of the club, I think we carried on, because to be a Man United fan, you have to be a certain kind of a person. I feel that. I don't know why. Absolutely. I love Liverpool fans because we have a certain kind of demeanor and certain kind of way. That is why we love this club, because it's a struggle. It's not a club that's it's like so many years of struggle, and finally we have had good seasons. So to stick through that entire time, so I think it's not just about winning. Right, absolutely. I have to say to Shambhavi, as much as we love her working for us, she has entered the wrong chat box with this. नहीं, but yeah. Anyway, शुभांकित भाई, आपसे क्वेश्चन होगा. आपको आवाज आ रही है मेरी शुभांकित भाई? कैन यू हियर मी? हेलो शुभांकित भाई, आई थिंक आपका ऑडियो का इशू अब भी आ रहा है. एक बार आई थिंक आपका माइक का इशू है. हाँ, एक बार और कुछ
think it's a mic issue, Shubham Kid bhai. We cannot hear you. Sorry man. हाँ तो शिवम भाई से पूछ लेते हैं व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट कैलाफियोरी टू आर्सेनल वी वर लिंक्ड विद द गाय प्रीटी हेवीली नाउ आई विल टेल यू अ स्टैट अबाउट कैलाफियोरी हमारे जो इंडी फुटबॉल पॉडकास्ट में नेक्स्ट गेस्ट आए मतलब वी हैव रिकॉर्डेड द एपिसोड उसका नाम है एलिजेंड्रो इज एन इटालियन इन्फ्लुएंसर बट एलिजेंड्रो इज अ फ्रेंड ऑफ कैलाफियोरी और उसने हमें बोला पॉडकास्ट पे ये वाली बात कि क्या बोलते हैं ही फील्स दैट यू नो this summer that there's a chance कि he will move clubs और फिर ये ऐसा हो गया. What do you think about it? Do you think it's a very good signing? Do you think Liverpool should have swooped in earlier? What are your thoughts with it? Yeah, so basically with Liverpool we have had history with Italian players. So I mean it's a मतलब player के against कुछ नहीं है, but we are pretty much jinxed with having Italian players. मतलब मुझे तो recent history में याद भी नहीं है किसी इटालियन प्लेयर ने हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. आई थिंक एक्विलानी आया था, मारियो बालोटेली. वही कह रहा हूँ कि मतलब वी हैव बीन प्रीटी डाउन विद इटालियन प्लेयर्स. नो डाउट्स ऑन हिज टैलेंट. मतलब कैलाफियोरी इज ग्रेट और हमें डिफेंडर चाहिए भी, बट आई थिंक just looking at his age na, maybe at background Edwards and Co is trying ki we assess Quansha more, right? क्योंकि अभी अपने पास 4 सेंटर बैक्स हैं ही. मतलब आई एम इंक्लूडिंग क्वांशा इन टॉप 4 नाउ सिंस माटिप हैज लेफ्ट. एंड आई एम आल्सो हियरिंग कि एक एकेडमी सेंटर बैक है जिसको लिवरपूल का कोचिंग स्टाफ इज परसुइंग एज अ गुड फिफ्थ. आई थिंक आप सेप वैंडनबर्ग की बात कर रहे हो. एकेडमी नहीं सेप वैंडनबर्ग नहीं. ही इज अ यंग 19 ईयर ओल्ड. टॉकिंग अबाउट नालो जो प्लेयर है एक उसकी बात कर रहे हो. I think yes not Sepp Vanderberg but Nano शायद. So अब यार ऐसे तो अपन उससे भी बहुत ज्यादा लिंक हुए थे और हेवीली लिंक्ड हुए थे कैलाफियोरी से ज्यादा वो लेनी यूरो आई थिंक, राइट, जो मैड्रिड गया. अपना काफी हेवीली लिंक था. एंड आई थिंक इन द मार्केट ही हैड बेटर अप्रोचेबिलिटी एंड बेटर नेम देन this Italian guy. तो ठीक है. I think this clearly shows कि we are not in for a centre back at this moment. Absolutely, I agree with you. But I really feel the centre half should come in at this point because I think another centre half is required since Matip is not there. कुछ comments ले लेते हैं. Loki bhai says he seems like the kind of player we really want. Even we feel that, but लगता है तो he's as good as gone to Arsenal now. By the way, Loki is sorry for interrupting. Loki is my partner in Jaipur Cup. Okay. लोकी भाई आपको एक अच्छी बात बताना चाहूंगा. My dad was posted, मतलब वो इंश्योरेंस कंपनी में वर्क करते हैं तो वो he was working काफी साल in Jaipur. So Jaipur is a city in which I have spent a lot of my childhood also. मतलब we used to कभी visit him like twice, once in 2-3 months. तो Jaipur is some city which I really like. तो गौरव टावर मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा कभी, but still मतलब as a city. अभी कहाँ से based out हो आप? दिल्ली या बॉम्बे? अभी नोएडा, which is near Delhi only. Right. Loki abhi is in Bombay, so he is part of Bombay Mumbai Corp as well now. अच्छा अच्छा नील के साथ, नील भाई के साथ शायद. Yes, नील के साथ. Shambhavi says I think okay. Yes. Shambhavi says only here because the episode says gossip. Absolutely, Shambhavi, we always welcome you to any of our streams, and I'll make sure to forward you some of the Ambani wedding gossip which I got from a friend after this. Alex, LFC Jaipur and LFC Guwahati should have a match. Now I'm waiting for Siddharth bhai to also join us because I have something in mind. But Siddharth bhai होगे तो obviously वो match हो पाएगा आज LFC Jaipur और गुवाहाटी का. That was the whole point. But yeah, देखते हैं if he can join us again. How much are we depending on the academy players this season? And the by looks of it, losing Matip and Thiago should worry to some extent. See, मतलब मुझे लगता है कि Matip and Thiago are not available for a long time. Thiago तो मुश्किल है 6-7 मिनट खेला है. What do you think? Like, do you think a direct replacement for Thiago is required at this point? यार I don't think, because हमने seamlessly तो Thiago को खेलते हुए देखा ही नहीं है in last 2 years. और लास्ट ईयर तो वो सिर्फ आई थिंक आर्सेनल वाला गेम ही शायद खेला था ना 6-7
मिनट का बस, या कौन सा गेम, आई डोंट इवन रिमेम्बर उसकी परफॉर्मेंसेस, वो इतना मतलब ही वाज अ ग्रेट टैलेंट। आई डोंट थिंक, बट मल्टीपल रिप्लेसमेंट, आई थिंक आपसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मे बी वी रिक्वायर अनदर सेंटर बैक, साइटिंग कोनाटे की इंजरी मतलब रिकॉर्ड्स, एंड गोमेज और क्वांचा, मतलब गोमेज के मोमेंट्स तो वी ऑल नो, and Kwancha is too young for it. So I think we still require a center back. Yes, I agree to it. जैसे But कि आप not सब देख Thiago. सकते हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने शिवम भाई को इन्फ्लुएंस कर दिया, सिर्फ एनी पॉलिटिकल पार्टी वांट्स टू स्पॉन्सर द इंडी फुटबॉल पॉडकास्ट एंड गेट मी इनटू पॉलिटिक्स, आई एम ऑल इन, मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ। And Siddharth Bhai has joined us, so yeah, it's very good because we have a special segment for you guys at the end of the episode. How much are we depending on the? अच्छा, ये हो चुका है क्वेश्चन ना, हाँ। Loki Bhai says Balotelli, of course he was an Italian gem for us, though I think he wasn't that bad a player, पर वही है कि उसकी PR ऐसी थी, और of course he was a I think a round peg in a square, मतलब वो जैसे बोलते हैं square peg in a round hole जो भी बोलते हैं। Ankush, can you please wear a Liverpool shirt backwards? अरे I think I can do that definitely sometime around. What do you guys think about the club needing a six? शिवांकित भाई, जैसे हमने बात की थी इस बारे में, और हमारे गेस्ट्स ने भी की थी इस बारे में कि six is required definitely, but let's see if Liverpool do invest. I think Ian Doyle और Paul Goss ने बोला है कि he's a six is a priority at this point of time. सिद्धार्थ भाई, अदर देन अ सिक्स, मतलब काफी लोग विंगर्स की बात कर रहे हैं कि यार साला रिप्लेसमेंट तो क्या कौन ही कर सकता है साला को रिप्लेस, बट एक साला का एक बैकअप आना चाहिए। डू यू थिंक मोहम्मद साला बैकअप इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस विंडो? Who do we have in its place? As in Ben Doak, and who else? Yeah, Ben Doak, KD Gordon, and of course Jota can play there, Diaz can play there, but yeah, there's no direct replacement there. So I think obviously we know that I think Salah is probably going to go next season. I don't think he's going to stay, because even this season him staying is like a surprising move, because I thought he'll just probably if we had won something he would have probably moved on from the club. Maybe yeah, and so I don't know, who do you like? I have one person in mind, but I'm not sure if that's like a like the right answer. But I think Jared Bowen would be a good fit. But I think he's past that age of 24-5. I feel that is the only thing stopping. I think. I think Yeah, and Kubo के no, लिए I बहुत mean, I'm like, he's not a, हो रहा है. हाँ yeah, शिवम he's भाई, not a Kubo, realistic हाँ, signing, but I see, like he is like a again front end defender. What we need, we cannot have somebody absolutely. who's lacking, who's not defending. So with Bowen, I see that he's also clinical, unlike our strikers. The entire season, like what happened. So I think Bowen would be a good fit in that area. He might not be like a very popular Absolutely. choice, but that's what I think, because in English football he's clinical, and then he's like a fighter. He fights for the ball. So I think he would be good Absolutely. fit. Not a replacement, but something that can help us. Absolutely. Before we come to the Kubo वाला point, शिवम भाई, बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर दी, इसका नाम दी इसकी आपने। सिद्धार्थ भाई की अभी फैन स्टार्ट हो गए हैं कि आई लव हाउ सिद्धार्थ भाई encapsulated the journey of a Liverpool fan, represents the middle working class who are always punching above their weight category in a sublime charismatic fashion. So for all fan clubs announcements related to Siddharth bhai, please keep following the Indie Football podcast, like the stream, subscribe, और सिद्धार्थ भाई को हम लाते रहेंगे अब अपने लाइफ में, शिवम भाई को भी लाते रहेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू अस। हम ऐसे नहीं कर सकते, स्पेशली एलएफसी फैन क्लब्स में नहीं कर सकते। Shambhavi Mishra even admits LFC truly sounds like a family, just like she's a part of the IFP family with us. Dwaypayant Mukherjee says Loki does the magic in Marvel, and I'm sure he will also get some magic done at Jaipur Cop. इनके अलग ही बैंटर चल रहा है कमेंट्स में। Dwaypayant says, "Dean bro, that's some fetish." I must say, हाँ, मैं आपकी बार मुझे लगता है कि यूनाइटेड की जर्सी पहन के आ जाऊंगा, और इतनी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को तो, बट या do you think Nunez's role should be changed a little bit to make it the same role in Uruguay, as he clearly performs way better than them? इस पे आते हैं लोकी भाई, पर पहले कुबो की बात कर लेते हैं। शिवम भाई, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया। we were also linked to a deal for him अभी recently, फिर सारे जर्नलिस्ट ने आके बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है अभी at this moment of time. Now I'll say one thing about him, he has scored just 1 goal and 1 assist this calendar year, लेकिन पोटेंशियल बहुत है, प्लेयर अच्छा है, फ्लेयर है, लेफ्ट फुटेड है,
I think has played for Barcelona, the La Masia Academy. I think if I'm not wrong, Sure, I he think so. हाँ आई नहीं रियल मैड्रिड या बार्सिलोना कहीं से तो yeah. एकेडमी में खेला है वो हाँ मैड्रिड से हाँ है, मैड्रिड से आई थिंक अच्छा कुछ है ना, मैड्रिड से है ओके हाँ तो आई थिंक मतलब यस। हाँ मतलब He played in Real एज मच एज Sociedad, आई I नो think. हाँ आई नहीं नहीं, थिंक वो रियल रियल सोसाइटी मैड्रिड में में तो था अभी खेल रहा है वो। हाँ करेक्ट कह रहे, अच्छा सही कह रहे हैं अनुकाश भाई। हाँ the reason I'm saying this is because I read an article which said कि Kubo जो है he could have been a reason for Suarez not going to Barcelona. इसकी वो अच्छी स्टोरी है। इसकी स्टोरी ये है कि कुबो वाज वन ऑफ द 10 ओवरसीज प्लेयर्स जिसकी वजह से फीफा ने चार्ज किया था बार्सिलोना को कि उनकी ट्रांसफर बैन लग जाएगा 2 साल के लिए। लेकिन जब बार्सिलोना ने अपील की तो एक सीजन डिले कर दिया वो ट्रांसफर बैन। उस सीजन बार्सिलोना वर एबल टू बाय सुआरेज। सो कुबो कुड हैव बीन द फैक्टर कि आता ही नहीं वो। इसलिए आई थिंक देयर इज सम रिगार्ड विद दैट। बट या व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कुबो सिचुएशन शिवम भाई? यार सो देखो पर्सनली तो हम आई डोंट थिंक किसी ने उसे खेलते हुए ऐसे देखा है, बिकॉज ही इज नॉट प्लेइंग फॉर अ Yeah. टीम जिसके हम मैचेस भी मतलब देखेंगे अनलेस ही इज लिंक टू अस। लिंक के बाद भी हमें दिखता है यूट्यूब पे थोड़े से वही हैं उसके मिक्सेस। तो यार आई थिंक आई एम गोना ट्रस्ट whoever comes to Liverpool because now we have Michael Edwards back, so वहाँ तो कोई डाउट नहीं है अब हमें। if he is figuring out, if he knows that he's the man who can replace Salah, because मैं सिद्धार्थ भाई के साथ हूँ, I would have loved Gerard Bowen in our club. He's a fighter just like he said. भाई he's a dog, he's a fighter, he won't give up till 93rd just like Salah. Salah is same, antics Yeah. अलग है but same. अब कुबो को देखा ही नहीं है यार, कैसे बताएं कि मतलब हाउ विल ही फिट, हाउ गुड ही इज। स्टैट्स देख के इट इज वेरी सिनोनिम्स कि भाई he has just had one goal and one assist in the whole calendar year, but I think that is also to be done due to his I mean appearances. ऐसा भी नहीं है कि is the main player there at Real Sociedad, तो I really really can't say feel क्या है। I really feel one of your both you gentlemen should come as a one of our paid guests on the Anti Football podcast because जो मुझे काफी लोग हैं जो YouTube compilation देख के बोल देते हैं भाई कुबो is the player, भाई कुबो अगला मेसी है ये है वगैरह वगैरह। But I have to say that you guys are very honest about it. बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा because a lot of fans are कि नहीं नहीं एक YouTube वीडियो देख लिया he is the one. I remember Nunu doesn't start over for Jota I think so, even I feel that Jota is more clinical, but I have to say this one thing because I remember watching Brozovic a few years back, Kovacic a few years back, और मुझे लगा कि भाई ये तो Coutinho replacement है बिल्कुल. But they are very different players, so I think a YouTube video can be a very misleading thing. So I think it's a very practical approach. So I we mean, are that is when going. it is entertainment. Absolutely. हाँ it's for entertainment, correct है। Absolutely. So guys, आज का सरप्राइज एलिमेंट ये है कि चलो बता ही देते हैं कि देयर इज अ क्विज। बहुत छोटी सी क्विज है, 3 क्वेश्चन की क्विज है, एक है ना, भाई बेइज्जती करा के भेजोगे यार, बेइज्जती नहीं नहीं करा के भेजोगे नहीं नहीं बेइज्जती की कोई पहले ही बात नहीं है। एपिसोड में। नहीं नहीं बेइज्जती की कोई बात नहीं है। आई थिंक ऑनेस्टली ना मतलब दीज आर रिलेटिवली टफर क्वेश्चंस कि अगर बहुत इजी पूछता बता ही देते सब लोग। But yeah, it doesn't matter. At the end of the day, it's all about following the club and supporting the club that we love. But yeah, guys, before we do that quiz, name your all-time PL only Liverpool 11. Shivam bhai, I'll start from you here. फिर सिद्धार्थ भाई के पास आता हूँ मैं इस क्वेश्चन को लेके। What is your all-time Liverpool 11? भाई मतलब see I am a guy who creates all time for the उन players के लिए जिसको मैंने देखा है खेलते हुए। अब मैं course, आके of course, Kenny yeah. Dalglish को हाँ आगे नहीं No, रखूंगा, no, है no, ना। no. हाँ That won't be fair. हाँ, Yeah, that of is for course. sure। हाँ बॉब तो पेसली को मैनेजर नहीं बनाना। हाँ हाँ करेक्ट है ना। तो भाई कीपर में आई थिंक Roy Hodgson. was a very हाँ मतलब it's a very tough fight between Pepe Reina and Alisson, but Alisson for sure. So I'm Okay, starting fair enough. Alisson right there. Left back, I love Andy Robertson for what he does, but I started following Liverpool because of John Arne Risa. उसकी Yeah. फ्री किक मैंने Uh, देखी थी, तो अब मैं absolutely. उसको हटा ही नहीं सकता किसी टीम से भाई। we have had great left backs. Andy Robertson Uh, is I think one of the top, but yeah, for me it's John Arne Risa in all time. Okay, yeah. then Nobody is allowed to do this golf club uh, incident. then I
think right back has to be Ta. I mean, I would एक मतलब फिनिन भी है जिनको खेलते हुए देखा है, एंड देन आरबिलुआ भी है, बट आरबिलुआ ने बहुत ही मिक्स पोजीशंस खेली हैं हमारे लिए. लेफ्ट बैक भी खेला है, सेंटर बैक भी खेला है, राइट बैक भी खेला है. ही वाज आई जो थिंक द गोमेज मोस्ट टाइप का. कंप्लीट डिफेंडर, बट Yeah. और ऊपर वन नॉच Hmm. अबव जोए गोमेज. ओके, Yeah. सो सुभांकित भाई, फ्लैनेगन नहीं बोलूंगा भाई. Thank God आज Flanagan नहीं बोला. ठीक है. So I think Ta is going to be there just for how generational he is. Center backs, it's difficult. I think this generation is going to call Van Dijk there. Easy peasy, but I think I'm going to Loki go acts with you on the these argument. with so Sami Hupia and Van Dijk. Interesting. Even I would go for that if I were in your place. CDM, love You can what play- Fabinho. Sorry. You can play two center midfielders and an attacking mid two. मतलब entirely up to you जैसा आप कर. वहीं जा रहा हूँ बस. So CDM love what Fabinho has done for this group under Klopp, but by Xavi Mascherano and Xavi Alonso. Of course. तो ये दो है मेरे तो, मतलब I'm gonna make them sit. उनके आगे स्टीवी जी. मैं भी वही सोच रहा था अभी. शिवम भाई ने स्टीवी जी नहीं बोला तो अभी फिर नंबर आ जाए. ये नंबर भेजो शिवम भाई का. स्टीवी जी नहीं बोलता तो मैं व्हाट्सएप करता, भाई मुझे किक कर दे. मालूम पड़ा जयपुर कॉपी जगह एलएफसी जयपुर में गालियां पड़ रही. So I think Stevie G, then Salah on the right. Yeah. Okay, and now this is difficult, so I'm gonna युवराज आ गए भाई. युवराज is Hi, Yuvraj. हमारे भाईजान. So I think Salah right. Center, I'm gonna go with, I love Bobby, but El Nino, Fernando Yeah. Torres for me. Yes. And left You have is got a tricky. United fan saying Dehan Lovren. ये भी हमारा ही है भाई, ये भी हमारा ही अच्छा है. आपका ही है. उन्होंने रेड डेविल्स का लोगों के लगा रखा है. नहीं हमारे साथ के यहाँ. He's a United Okay, fan. so left. युवराज एक से गाइस एक सेकंड. युवराज भाई आपकी साइड से डिस्टर्बेंस काफी आ रहा है. थोड़ा सा आप देखना. Just a second, I'll check. या नो वरीज. हां कंटिन्यू करो शिवम भाई. So left wing, it's not a natural position, but I'll keep Suarez there क्योंकि मैं उसको हटा नहीं सकता मेरे all time 11 से. So that is my all time 11. शुभांकित भाई सॉरी मैं आपको गलत फाइट में डाल दिया. वो यूनाइटेड फैन नहीं है. ही जस्ट हैज द रेड डेविल्स लोगो. ही इज अ लिवरपूल फैन ओनली. कनिश भाई एनीवे ठीक है. दैट्स अ वेरी गुड 11 आई थिंक. सिद्धार्थ भाई व्हाट इज योर ऑल टाइम लिवरपूल 11? I think there are only few changes because I think I have almost like a similar team. So only changes I would have would be, obviously I would put Robertson in place of Risa. I mean, I love Risa, but Robertson has been that kind of a left back. I mean, that's clinical, that defense, that puts crosses in. I mean, we have two defenders who had like what 12 plus assists in a season. I think more than that. Absolutely. So Absolutely. I mean, Robertson is Yes. yeah. And obviously to see him, like come up ranks, once he was, I think, an understudy for who did we have? Moreno. He was playing as an understudy for Moreno. Then he went on to do something. He got injured. Yeah. And so I think in the midfield, I would have the same. I would have, obviously, Alonso would be there. I would have Mascherano as well to sweep up. And yeah, I mean, it's it's almost the same. Absolutely. I think these like players like Mascherano, Alonso, Gerrard, they just kind of put themselves in the squad with how good they have been. Torres, Suarez, You for can that never matter. argue about Yeah. it. Yeah. You cannot put them out. युवराज भाई आपकी भी 11 ले लेते और बाकी फिर अभी हम क्विज राउंड स्टार्ट करते हैं. आप भी अपनी जल्दी से 11 बता दो. क्या लगता है आपको? Sure. See, I'm not the OG, तो पुरानों का तो मुझे पता नहीं, but since 2013, 2012, mostly Klopp का 11 होगा मेरा. So it would be Alisson in goal, Van Dijk of course. उस टाइम कौन था यार? Van Dijk. साको था उस टाइम. साको था, हाँ right. But I won't put Sako in. क्लवान कबाब. So Joel Matip भी लगा लो. Trent Robertson, maybe Master Gerrard because of my bias.
क्योंकि देखा है उसको लास्ट के उसके 2-3 साल. So Gerrard of course, Mascherano dicey, but Fabinho because he won things at Liverpool, and then possibly Henderson because club captain, just a bias, my Yeah, clear bias. yeah. He just did more than what he was But expected out I of him. think Henderson doesn't Yes, get enough absolutely. credit for what he did. Yeah, he doesn't get enough credit. He's hated, I think, and उसको Mostly, इतना I मिला think है. the one move, Why? I think, Because changed the image. हाँ. नहीं नहीं यार, not even move, it's just that कि वो flamboyant नहीं है इसलिए लोगों को पसंद नहीं है. But I fought with all the football fans for I think 5 Yeah, years yeah, stating that he's the best average midfielder in the world. Yes. He's the best average midfielder. that's a nice way to put it. Yeah, I Yeah, agree. Nice way to put it, exactly. absolutely. And the front will be, of course, Salah, Bobby, of course. Mane से ऊपर कुछ नहीं है यार, because they want, of course. First time अपन, Absolutely. no Suarez, Absolutely. no Torres. yes, देखो, glory. I have seen the most titles with these flips. It's a recency bias थोड़ा, but ठीक है. Yeah, Suarez वो- maybe because of his shithousery, and I just used to love him as a character. But yeah, Bobby, we love Bobby, you know. So. I think एक और रीजन ये भी है कि none of मतलब although I know Suarez left one season late, but so अभी तक साला, माने और फर्मिनो ने कोई ड्रामा नहीं किया in terms of forcing a transfer out and all. So I think those were one of the reasons you would want to retain them. So युवराज भाई, इस वाले सेगमेंट में आपको शायद थोड़ा सा स्पेक्टेटर रहना पड़ेगा, या फिर आप चाहो आप जयपुर कॉप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, because यही करेगा भाई. it's a quiz round, जरूर, and जरूर, yeah, जरूर. 3 What? questions, एक एक I करके also need a questions पूछे जाएंगे. substitute. Yeah, yeah. You can bring a substitute. Yes, you can bring a substitute. So first question जयपुर कॉप के लिए, and these questions हो सकता है कोई ज्यादा टफ हो, कोई इजी हो, तो ये मत बोलना यार कि ये कोई bias नहीं है. It's just a random play of cards. So yeah, let's enjoy it. Let's do it in the spirit of the game. Doipayan Mukherjee says, which Liverpool player performed the best in the recently concluded UEFA Euros according to you? आप लोग क्विक आंसर दे सकते हो before we start the वो Netherlands boy Gakpo. कोडी आपको. Cody Gakpo, I don't remember. हाँ, I think ये दो ही all of us can unanimously agree on that, right? So start कर रहे हैं. शिवम भाई, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आपकी स्क्रीन पे तो नहीं है पर हाँ मैं पूछ लेता हूँ. Who in the 2005 final, Champions League final, Jerzy Dudek saved a penalty and Liverpool won. Who was the opposition team player whose penalty he saved to Shevchenko. make? Absolutely, that's right. Jaipur 1-0 हो चुका है. Jaipur जी, it seems like आज रेड से पिंक होने वाला है, but yeah, Guwahati is here. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है सराद भाई, but I think आप बता सकते हो कि अगर आपने स्टार्ट्स पढ़े हो, माफ करना मुझे, पर तब वैसे कॉमन है if you are into a bit of into LFC history. Who scored the first ever Premier League goal for Liverpool Football Club? Premier League goal. Oh my God. That would be what, 1991 or 1990? Somewhere around that. I'll give Is you it a one striker? hint. I'll just give you one hint. Just because it's थोड़ा difficult question है. वो ये कि उसका नाम एक स्टोक सिटी के प्लेयर से राइम करता है. ये मैं इतना बोल सकता हूँ. That is one hint I can give, and one hint I'll give Jaipur also अगर कोई रिक्वायर हुई तो. स्टोक सिटी के प्लेयर से राइम करता है. राइम मतलब it's like हाँ राइम करता है, सिमिलर भी हो सकता है, but one स्टोक सिटी. I Former remember स्टोक सिटी प्लेयर of course. Ryan Shawcross from Stoke City. Okay. The answer is Mark Walters. एक Walters नाम का प्लेयर होता था स्टोक Oh सिटी में. yes, yes, yeah. What is something? Walters है? हाँ, जॉन वॉल्टर्स I- था, I think, if I'm not जॉन wrong. वॉल्टर्स था ना उनका. हाँ. स्टोक सिटी में जॉन वॉल्टर्स था, अपनी हाँ. लिवरपूल में एक मार्क वॉल्टर्स था, बट अब क्वेश्चन रिलेटिवली इजी है. नहीं तो पता टू ये. That's not fair. It's not easy. नहीं पता था भाई. What are these questions? नहीं अभी क्वेश्चन आई ट्राई टू मिक्स इट अप फॉर जयपुर को आल्सो गिव देम अ रिलेटिवली टफर क्वेश्चन. तो ये वाला क्वेश्चन इजी है. नहीं थोड़ा साला के फर्स्ट सीजन में हाउ मेनी गोल्स ही स्कोर्ड इन द प्रीमियर लीग? शिवम भाई, थोड़ा सा मतलब इट्स डाइसी, I have the answer. 38, is it? अच्छा ओके. नहीं इन द प्रीमियर लीग हाउ मेनी Premier गोल्स League. हाँ Premier गोल्स League, डिड yeah. साला स्कोर इन द प्रीमियर लीग हाँ इन द डेब्यू सीजन? युवराज का भी आंसर ले लेना, बट मेरा आई थिंक इट वाज 17. अच्छा, युवराज 24, is it? नहीं 32.
In Premier League. Yes, 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 yes. yes. I was gonna He say- वो scored second season नहीं था क्या उसका जिसमें उसने No, करा no, था? no. First season First That's why he scored a first one season wonder. सीजन में 32 Yes, थे। that's why he scored a one. इसलिए मेरे को Yeah. 38 याद आया, but it was 32. Yeah, Yeah. yeah. Now I'm Yeah, gonna yeah. balance the books. I'm gonna balance the books with a relatively easier question for Siddharth bhai. 2019 Club World Cup लिवरपूल ने किसके अगेंस्ट जीता था? अब ये क्वेश्चन इजी है. Now you cannot blame me for bias. It was Because not this is so a many. recent thing. Yeah, it was What's your final Brazilian club, answer? but You saw the game, Shivam. Yeah, is it? हाँ मेरे को भी पता है भाई, You saw the live देख after के में तो आया you था। know. हाँ. Cause गाइस स्लेजिंग मत करना सिद्धार्थ भाई को. अभी उनको मैं आंसर नहीं नहीं, अरे नहीं भाई, साला को ऑल टाइम 11 में रख रहे हैं, उसके गोल नहीं बता पा रहे भाई, स्लेज तो हम हो गए। नहीं सिद्धार्थ भाई आप बता सकते हो. no, I know it's a Brazilian club, but I'm not sure. You're close. It was You're close. Fluminense Yes. or who else? क्लोज हो, बहुत क्लोज हो। बहुत क्लोज हो. Because I know Bobby scored in the 93rd, 94th minute. Yeah. That's how he won. But yeah, I think I'm totally blank. I'm so sorry. It's नहीं sorry की बात नहीं. It's all chill. We are all Liverpool fans. It's Flamingo. Yes, Shivanki bhai Yes, also 2 said minutes it's Flamingo. Why didn't you say F? मैं बोला बहुत क्लोज हो आप। you were close. Yeah. अब वाले questions जो 99 minute। so yeah, Jaipur Cobb is I'm gonna winning switch on my 1-0. phone and I'm अरे नहीं बट नेक्स्ट क्वेश्चन जयपुर कॉप के लिए युवराज भाई आप एज अ सुपर सब आना चाहोगे फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन? Sure, बिल्कुल Sure. आगे. ठीक है. फर्नांडो टोरेस लिवरपूल में किस ईयर में आया था? एकदम गलत टाइम पे आया. ये 20 चेल्सी था 2010 11 no 2010 11 no 2009 10 no bloody hell नहीं मेरे टाइम से पहले था यार dude 2007 is the answer. चलो सिद्धार्थ भाई आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है रिलेटिवली, पर हाँ इट कैन बी अ ड्रॉ. माइकल ओवन other than Steven Gerrard, I think he is the only player जब नहीं Steven Gerrard क्या मतलब I think he won the Ballon d'Or. Michael Owen won the Ballon d'Or. लिवरपूल से वही जीता है recent मतलब हिस्ट्री में देखा जाए तो. Which year did Michael Owen won the Ballon d'Or? 2002. Win the 2000. Oh, 2001. 2001. I remember. Siddharth भाई एकदम जीता था अपना फाइन मार्जिन से आ रहे हो. आज आप 2-1 जीत गए हो, एकदम फाइन मार्जिन से आ रहे हो. बिल्कुल जैसे कह रहे हो एकदम फाइन मार्जिन. बट या गाइस इट वाज अ वेरी नहीं but guys so the to win the Ballon d'Or. yeah but guys this was a very fun session. Thank you so much for coming in, for joining on the live. Thank you Yuvraj bhai, thank you Shivam bhai, thank you Siddharth bhai. We look forward to more such collaborations with Jaipur Co-op, with LFC Guwahati, knowing your rich history, the work you guys have done. Please do follow them on Instagram. Please do subscribe to the Indie Football Podcast here. Do follow us on Instagram और Twitter, और जहाँ भी हमारा कोई हैंडल मिल जाए हमारे ही होगा. अगर कोई फेक बना रहा है तो प्लीज बताना जरूर. That's a good thing. So yeah, thank you so much everyone for joining in. Please subscribe to the Indie Football Podcast and we look forward to having more such discussions. Thank you guys. Thank you so gentlemen. much. Thank you so much. Thank you. Bye guys. Yeah, absolutely.